हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सराउंडिंग चेंज, बिकॉज मैं अपने घर में जो है अपने ग्राउंड फ्लोर पर जो है अपने रूम में अपना स्टूडियो शिफ्ट कर लिया एंड मैं यहीं से अब मोस्टली अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। सो दिस वीडियो इज टाइटल्ड डम थिंग्स फेमिनिस्ट से एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रनिंग सीरीज ऑन द चैनल, बिकॉज बहुत सारे फेमिनिस्ट पेजेस एंड ट्विटर अकाउंट्स पे मुझे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है जो कम्प्लीटली लाइक स्टूपिडिटी से ऊपर लेवल पे होता है, बट उस बारे में अपने चैनल पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता। और बहुत सारे जो है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, इफ़ यू हैवंट जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजते भी रहते हैं जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे बात करूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वन ऑफ अ मैनी पार्ट सीरीज। सो द फर्स्ट पोस्ट जिसके बारे में हम पहली बार बात करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम अ पेज नेम्ड वुमेन्स वेब। एंड वुमेन्स वेब इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट पेज एंड बहुत ही कमाल की जो है पोस्ट्स इनके चैनल पर होते हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर पोस्ट मुझे जो आज मिली, इट्स अ 10 स्लाइड पोस्ट एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मुझे लगा कि पहले इस बारे में बात करनी चाहिए। सो द फर्स्ट स्लाइड इज दिस वन: थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेबल व्हेन मेन डू इट। अ man's extramarital affair is a woman's incapability to keep him happy, whereas a woman's extramarital affair is a question of her character. Why? Now, मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है, इज हाउ मिस इन्फॉर्मिंग दैट इज। सो फॉर पीपल हु डोंट नो, अ मैन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मीन्स दैट वुमन कैन फाइल अ डिवोर्स केस ऑन हिम एंड गेट अ डिवोर्स. A woman's extramarital affair means that a man has to sit and deal with it, because if he files for divorce, the woman can file for dowry, harassment, domestic violence, A, B, C, D, blah, 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 and he can do nothing about it. कुछ भी नहीं कर सकता उस बारे में. फिर हाथ जोड़ के उसी को माफी मांग के उसके घर में वापस लाना पड़ेगा या फिर पैसे दे के सेटलमेंट करना पड़ेगा. That's all he can do. So this is not something that is in a man's favor. It's in the woman's favor. ये लोगों को पता होना चाहिए. Next one. Getting up late in the morning. What? Getting up late in the morning is acceptable to men. मेरे घर में आके देखो मैडम जी, यहाँ सुबह लेट कोई नहीं उठता, ना मैं ना मेरे घर वाले, no one. And it's good to wake up early in the morning because दिन लंबा हो जाता है. You can be more productive. You can go for a walk or go for running in the morning. Good for your health. It's not acceptable for men to wake up late. Because इसके अकॉर्डिंग तो हम आदमियों को तो कोई काम होता ही नहीं ना आदमियों के पास नौकरी होती है, ना आदमियों के पास कोई काम होता है. सब आराम से सारा दिन सोते हैं. औरतें काम भी, नौकरियां भी करती हैं, औरतें ही घर का काम भी संभालती हैं, सब कुछ औरतें करती हैं. आदमी तो बस पड़ा पड़ा खाता है, राइट? बिकॉज यही तो है पेट्रियार्की. ऑफ कोर्स, यस, आई एग्री. नेक्स्ट. When a man wants to live with his parents, he can live as long as he wants. But when a woman wants to visit her parents or wants to stay a few days more with her parents, suddenly she is an irresponsible woman. ये बहुत ही जो है कंसंट्रेटेड आर्ग्यूमेंट है एंड ये मैंने 2-4 जगह पे मैं से देख चुका हूँ. इट्स नॉट स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट, बिकॉज स्पेसिफिक केसेस के हिसाब से ये होता है. अगर घर पे तुम्हारे बच्चे बीमार हैं एंड तुम अपने घर वालों के पास रहने जा रहे हो, दैट्स इररिस्पॉन्सिबल. बट इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड वी वांट टू स्टे एट योर पेरेंट्स फॉर अ फ्यू डेज एंड योर in-laws are refusing, that means they are idiots and that means that they are controlling you, which is not good. But ये बहुत सारे केसेस में नहीं होता है. This is just, ये अगर एक बार कोई तुम्हें कुछ कह दे कि मतलब क्यों जा रहे हो, सो उसके लिए जो है औरतों के दिमाग में बिठाने की चीज़ है ये. जो what feminists do is make women insecure about their own lives. So and that's exactly what this is. So if somebody refuses you, even for valid reasons, कि यार मत जाओ अभी ये है, so you are oppressing me. This is oppressive patriarchy. That's what happens. Next. Speak assertively without being called rude or aggressive. मेरे को ना ये आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आता. ये मैं ना बहुत सारे फेमिनिस्ट से सुनता हूँ. Being assertive or being strong on your point is different from being rude and aggressive. If somebody, मैं बात करता हूँ बहुत लोगों से दिन में, if somebody hasn't noticed, and there is a big difference between being rude or aggressive and being assertive. Difference होता है. Why can't feminists make this difference? It does not depend on your gender. It depends on how you're speaking. If you're raising your voice and you're pointing, that means you're being rude and you're being aggressive. Assertive and aggressive are different. Women can make the distinctions, but apparently feminists can't. That's what's up. Going out at night alone and exploring the stillness and beauty of darkness. I always wonder what's the world like in the middle of the night. It's been always a dream to see it without any fear or restrictions. Let me tell you, being out at night alone is not a pleasant experience. It's scary.
लाइक फेमिनिस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि मतलब सिर्फ आदमियों के लिए, औरतों के लिए स्केरी होता है बीइंग आउट एट नाइट अलोन, बट इट्स नॉट. इट्स स्केरी फॉर मैन. फॉर एग्जाम्पल, just 3 days ago, last Saturday, I was coming back home from Delhi and I was in my car and it was after 10:30 and it was raining and I was so scared because the road was completely empty. There was nobody around and it was so scary. मतलब feminists want to say कि मतलब सिर्फ औरतों को ही डर लगता है या औरतें ही हैं danger में when they're out at night alone. It's not true. Men get attacked much more than women. And that this is not a gender specific problem, and if it is, then it concerns more to men than to women. But they don't want to talk about real issues, right? They just want to make women insecure about their lives. That's exactly what they're doing and they're succeeding. Next, take rest, fall ill, expecting to be taken care of. इस बारे में बात भी नहीं करने वाला मैं. मतलब this is way too dumb to even argue about it. This is just smoking. Men smoke openly, but women have to find a place to do it because people stare. I'm not supporting smoking at all. It's not good for anyone, whether men or not. If it's not good for anyone and you're not supporting, then why the hell are you talking about it? Nobody should smoke in open and nobody should smoke in general. I am a recovering smoking addict, okay? And मैं बहुत confidence से एक बात कह सकता हूँ कि I was very scared every time I smoked in public. मैं बहुत छुप के कोई देख ना ले. It's not for women. And it's not that people stare. It's bad to smoke. You should not smoke. खुद ही बोलती है कि why can men smoke in public and why can women can. And फिर अगली लाइन में बोल रही है क्योंकि उसके बाद धोएंगे ना मेरे जैसे लोग बैठ के इनकी. तो अगली लाइन बोलते हैं I'm not supporting smoking. Then why the hell are you talking about it? Just say don't smoke and move on. But नहीं, हमें इसका भी feminist issue बनाना है ना. So that's how it works. Make women insecure about everything in their life, even their addictions. Next, wearing comfy clothes in summer, wanting to or being offered the best portion of food, traveling alone, not an early riser, being lazy, moody. क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मतलब कहाँ से आ रहे हैं लोग? मेरे को being rude is allowed to men. Being lazy is allowed to men. Being moody is allowed for men, but not for women. अच्छा. And getting the best portion of the food, ये तो मेरे को समझ में भी नहीं आया. मतलब रोटी होती है, उसमें best portion क्या होता है? But best portion मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. Next. Getting married after divorce. That's difficult. That's a tough one. Both for men and women. They all obviously want to make it a gender specific issue, but it is actually very difficult for divorced men and women to get married these days. Very difficult. I can tell you from personal experiences of reading hundreds of cases. This is not a gender specific problem. This is a huge problem in our society right now. So that's it. And आज हमने सीखा कि women's में don't actually know what they're talking about, because being rude is not allowed for men, and when a person falls ill, being male or female, they should be taken care of, and they are taken care of, and they are allowed. Nobody's allowed to get ill, but if they get ill, they get ill. But इनका काम है कि एक सर्कल बनाना जिसमें हमें देखना है. वो सर्कल हम सारी औरतों को दिखाएंगे. देखो अगर तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है ना, इसका मतलब तुम oppressed हो and you should get out of it. Like I have seen feminists who go up to settle happy women and say, no, you are not happy. You are actually oppressed. She chose not to work. You didn't choose. You were forced. But the woman says, I chose to not to work and to take care of family. You have been programmed by birth to be this way. You have been programmed to be caring, even though it's a biological fact, but I'm not going to tell you about biology because I want to misrepresent biology and psychology to make sure that you feel insecure about your life and I can sell my content. ऐसे तो चलती है दुनिया. So that's all for now. So the dumb thing feminists say is going to be a running series on the channel. If you find a post, if you find a video, if you find anything that you want me to talk about on the channel, send it to me. If you can't send it on YouTube, you can get us on Discord or on Instagram or on Twitter. That will be all for now. Namaskar.